Hello, Assalamu alaikum. Good evening, all of you. Can you please confirm if you can hear me? Just want to check if everybody can hear me. Thank you, thank you, thank you very much. Fantastic. Okay, let me just switch off my video. Share this questions box with you. All right. Great, thank you very much. 52 attendees. All right. Okay. Let me begin by asking, how was the last session for those who have had their teamwork session on Saturday? How did that go? So raise your hands or otherwise type in the questions box. Hand raise or type in the questions box. Sayyeda Mahnoor Asif. Okay, let me try to speak again. For those who have attended the last team meeting session, I mean, there was one session that was held on Saturday, and for I think for group M1, this was the first teamwork session. So I wanted to ask you, how did the session go? Hafiz Muhammad Yasser has said it went well. Okay, Junaid Khalid has said he had it on Friday. Okay, so collective feedback, both groups, now that the groups have been merged, and I'm going to brief you about what is the what have we done with the groupings now. So collective input, how did that go? All right, if somebody wants to raise hands or share it, Azhar Bilal, I think Azhar Bilal, I can unmute you and you can go on. Please unmute yourself अगर अपना feedback दीजिए. In the meanwhile, I'm reading from the screen of what people have read or have written. Let me try. Yes, hello. Azhar, Hello, Harun. yeah, please go on. How are you? Alhamdulillah, I'm fine, Harun. I hope you're well as well. And it was a great session, Harun. I really had a good time in it. It was quite interactive. And actually, it was so good that I've been looking forward to the next session ever since. Really? Okay. And Yeah. Azhar, if you can share a bit of your, I mean, input on were there any difficulties faced? How was the contribution made by other members? How was that like? Well, of course, there were some limitations because we are all doing this online and it was the first session on Microsoft Teams. I don't think many members were also aware of how friendly Microsoft Teams was or not and how to use it. But Okay. unlike in actual live sessions where everyone is sitting around and seeing everyone, on the online session, you don't know how many people are actually active or not. There were only a few people, in my opinion. I'll say perhaps 10 people at max who were actively participating. I don't know Okay. whether that was due to the fact that many felt like they were unable to contribute due to the limitation of online session. You had to raise hand. Some people did not have the raise hand option. I was one of them, Right. so I remained silent most of the time. But in the end, the moderator Nizam, he did a really good job. He asked anyone who did not get the opportunity to speak to unmute himself and give his own contribution or his own input. So the moderator stepped in at a good time. He saw that for the first 20 minutes, there seemed to be a little bit of chaos. People were jumping in and some were unmuting by themselves. There did not seem to be a lot of
discipline, I would say, or professionalism at first. But as soon as the moderator, and in my opinion, having a moderator is a necessity, because uh, everyone feels like they have to contribute something. But once everyone is around, perhaps sitting, physically sitting, it's easier to manage rather than when you are online and you have to just give your input. You can't see which person is giving his input or someone is raising up to speak or that. It happened that several times 2, 3 people were speaking at once. So there seemed to be a little bit of confusion due to that. But overall, the moderator did a good job. And after that, the main issue was only time management. You could not give a lot of time to every person, and that was the beauty of it. So you had to Right. manage the time, 30 seconds max per member. Okay. Okay. Fantastic. Um, uh, Thank you very much. I think there are some important points that Azhar made here, and that was about moderation. Who took the role? I mean, the purpose was not for Nizam to come in as a moderator. The purpose was that the group, through its own activity, picks up a moderator, lets the person do the timekeeping, etc. So I think in that case, it turned out to be a challenge, and that's like Asr said, the group was not able to, straight away appoint a moderator in the first half an hour. So that's one input. Thank you very much. And may I now ask Mohammed Arshad to unmute and speak. And in the meanwhile, I'll read the comments on the screen also. I am so sorry. Thank you, Harun. Go on. I think I agree with Azhar Saab. He has given very good comments and feedback. I think, yes, we started like a chaos, but this was natural. This was like initial stage of team forming, storming, and then norming. So it should not be taken as a bad thing. We initially started at right time, 7 o'clock. Few people were active, few were joining in. We were waiting for some time, and then, for example, I proposed that I can be moderator. We started, and people seconded that yes, I can moderate, and then we move forward a little bit. But then, of course, there was technical hiccups. I was not very familiar with the team tool. Other people were having issue in terms of connectivity and options available, this and that. So it took some time to get to the tool, but then Nizam came in between, and then he took up the control of the whole show, which was fine also in terms of this thing that he knew he can control the tool itself. So if the tool has been handy, and I think we would have performed much better than what we did. Otherwise, I think the participation was very good. People were active. I know that in the group of like 30, 40 people, maybe not all were able to participate for different reasons. Some people are reserved, some are not as reserved. They are active. So yes, I think Azhar is right in terms of saying that maybe 10 to 15 people were coming again and again, and not all were getting a chance. But Nizam did a good job in terms of this thing that he provided opportunity to each and every one, and including females also. So yes, I think next session will be much better because now we know. I think we already have given some suggestions in terms of knowing that if we know the list of people who are participating, we can use that. If we know already who is going to be a moderator, I think in the last session I finished at 9 o'clock. I think we continued after 9, so we selected one person who will be our next moderator. So we already know who is going to be our moderator. So this type of learning goes through. So I think this was a good suggestion, good session in overall. Yes, some initial hiccups. Otherwise, it was really good. But of course, the time is always a challenge, and in that I think we as a member also has to make sure that we give opportunity to others also. We don't speak a lot, 3 4 5 minutes. We should speak like a minute, 30 seconds, whatever is the restriction, and then give chance to other people also to contribute. That's all I think from my side. Okay, thank you very much. My apologies, I could not catch up on the last bit of your of your feedback, but I think overall understood. Something about the technical contribution also. So, if any one of you want to discuss how was the technical contribution? I mean, these were logistics mostly. Should I The come? technical contribution. Sorry, you Can want I to come share again something? for the technical side? Sure, go on. हाँ जी, उसमें भी I think I learned a lot. People has very good
elevator pitches, 30-second pitch. Mm-hmm. There were many people who has contributed very, very good. Tahmina was one of Mm-hmm. them. Those people also. Okay. And Mm-hmm. then after every 5 or 10% have given their introduction, we evaluated who was good and who has good point catchy points. So there was good Mm-hmm. input from different people. Yes, many of them has been repeating kind of stereotype that we work here and there and do this and this qualification, that qualification. So we are all learning that it is not the time to tell about Mm-hmm. your employer or your qualification. This is to introduce yourself. So there were really good pitches also. Then we discussed about the Mean Mm-hmm. Tufani video. That was also And good. did most of you, Sorry. sorry, I was asking you, did people recall the do's and don'ts shared by Sajid about introduction, what not to do and what to emphasize, articulate, etc.? Did people observe that, number one? And number two, did the participants who were giving their feedback, uh, did they did they keep all those factors in mind that had been mentioned by Sajid? I think yes. Mostly people tried their uh, uh, their best. I, I Okay. I I I feel like people go by their natural style all the time. They need to go back, step back, and see what the points Sajid has made, and keep in mind those Hmm. points when they are preparing their pitches. There were some good Right. pitches also, exactly matching Okay. points that Sajid has provided. And yes, we were giving contribution and input and feedback to those people who were not able to do good pitches. All right. Okay. Thank you very much, Arshad. Let's move on to Maurice Khan. Maurice, if you can unmute yourself and tell us about your experience. In the meanwhile, I'll share one instance with you. And that was that we were in the process of interviewing certain people, and these were digital interviews. And one thing very clear came across, that those individuals who did not have the technical knowledge of how to operate the interface, Microsoft Teams, etc., even though there was no criteria mentioned to the individuals that you have to have Microsoft Teams skills. Even then, those who did not have a complete command over it or were facing difficulties in sharing screen, etc., it reflected very, very badly on them. I mean, straight away, it is expected now. It is an expectation of the employer that if you're coming across sitting, in a session where you're being interviewed, it is expected that you need to know how to operate the system. Yeah. So therefore, technical glitches, while you're playing with the system, fine, but try to find a solution to those ahead of the session. So my strong advice to you will be that if you are in such a situation where you, for example, being interviewed, or it's a very important meeting, or you're going live on a session where you're required to speak, etc., you have to be very, very careful about how you're managing Hello. the interface. Just give me a second, Mukesh. So how you managing Yeah. the interface? How is your internet connectivity? Do you know how to share a document? Do you know how to mute or unmute yourself, etc.? So that's a good piece of advice. Please remember that. कोई भी ये नहीं देखता कि अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आ रही है तो आपको उसका कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट या किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट उस चीज का आपको मिले, right? People expect that if you are coming online and you've been asked to speak, etc., you should have all the technical things sorted out, ironed out on your end. Now, one comment after which I'll call in Mughis, and that comment is that if you talk about Microsoft Teams, and I could even in the call I was noticing that people were saying my microphone is not available, I cannot raise hands, my chat feature is not available. So usually uh, uh, such things happen because of the client end, which means uh, और आप लोगों में से कुछ ने ये भी नोटिफाई किया था कि एडमिन जो है आस्क योर एडमिन टू डू दिस. एडमिन अपने साइड से सिर्फ एक पॉलिसी
across all participants implement cluster, which is implemented right now. The admin of Microsoft Teams sits in the UK, right? So this is a global purchase that ACCA has done, और इस इन सारी मीटिंग्स की जो स्टैंडर्ड पॉलिसी सेटिंग है और इसकी जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो हेड ऑफिस ने करके दी हुई है. किसी इंडिविजुअल को फोर्स माइक्रोफोन म्यूट की ऑप्शन अवेलेबल होना या ना होना, ये क्लाइंट साइड पे, यानी कि आप लोगों के साइड पे जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं या अगर आप वेब वर्जन यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, ये उसकी लिमिटेशंस है. ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, ऐसी सिचुएशन में एंटर होने से पहले बेहतर होता है कि आप अपने सिस्टम पे उसका टेस्ट कर लें. अक्सर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको टेस्ट परमिट करते हैं कि क्या ये पोर्टल या क्या ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम के ऊपर प्रॉपर्ली चलेगी या नहीं चलेगी. कुछ लोग मोबाइल्स यूज कर रहे थे, मोबाइल के ऊपर चैट के और म्यूट अनम्यूट के और कैमरास के ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो ये वो इनकंसिस्टेंसीज हैं जिसकी वजह से किसी एक इंडिविजुअल को तो हैंड रेज की ऑप्शन भी मिल रही है, माइक्रोफोन भी मिल रही है, चैट भी मिल रही है, किसी दूसरे इंडिविजुअल को उसी कॉल में ये ऑप्शंस नहीं मिल रही. ओके, तो पॉलिसी जब भी होती है या जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टैंडर्ड होती है टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, राइट. लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल को उसमें कॉल में नहीं आ रहा तो वो क्लाइंट एंड का इशू होता है. इसको जरा प्लीज सॉर्ट आउट कर दीजिएगा. अच्छा जी, मुगीस, सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम. आप Hi, जी फीडबैक दीजिए. Harun. How are you? परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच. Harun, the previous session was quite well. I think, for 40 to 50 people talked about their brief introduction, Amin Tufani and competency level. And there were technical difficulties, but it is manageable. So, and the admin level, the moderator is. I have to say that his performance is fine because he is moderating the session for the first time. So I think overall it's a really fine session Okay. for us, and I have learned a lot. 4 to 5 people, they introduce themselves a lot better than ours, and from them we learned a lot, and and uh, and looking forward for another sessions for I'm looking for the FCCS, how they introduce themselves, the people who are working for the 10 years, for My 10 to apologies 15 years. interjecting. Yes. सजीद ने अपनी एग्जांपल खुद दी थी आपको, राइट? Yeah. So Sajid is very well experienced. Sajid ने अपनी जो एग्जांपल आपको दी थी उसमें I think there were clear indications of what articulation, what terminology, etc. So Yeah. आपकी बात ठीक है. It is important to learn from within the group members as well, and which is exactly why these team meetings had been organized. लेकिन एक चीज मुगीस, and sorry मैं आपका टाइम स्लॉट ले रहा हूँ अब, एक चीज जिसका मुझे थोड़ा सा I'm a little concerned, and that is Nizam was there to facilitate the discussion. Nizam was not there to take over as the moderator. Yeah. When I compare the member groups with the students group, and this was to my utmost surprise, Yeah. students picked up their moderator in the first 5 to 10 minutes when they saw that. I mean, there was no instructions given. I mean, exactly the same instructions that were given to members, the same instructions were given to the students. They picked up their moderator in the first 10 minutes. And then throughout the call, Nizam did not have to interfere. Yeah, Nizam just stood back there. कोई technical issue आ गया तो उसको address कर दिया, etc. The rest of the discussion went on their own. I mean, in case of members, I would have expected, and considering the fact that even in a session, I was telling members कि आपको इस तरह करना चाहिए, आपको इस तरह
एक लीड सेलेक्ट करके फिर उससे कहें कि वो अगले लीड को हैंड ओवर कर दे एक्सेट्रा. So in case of members, I had to explain this, but in case of students, I did not have to, right? Which was I, an utmost surprise. And yeah, please, yeah. please go on, please. Yeah, I just want to say that these are the sessions. They are having the facility and to have this session in their student life. And as per as I compare myself, I just go to my institute and take my class and just went back. And nowadays, I saw students. They were after having their class, they were still sitting there and they were discussing the lecture. But in my days, people were coming just like they don't have this kind of mindset so, to interact with other students as well. And I just have I think my past experience 4 to 5 student my friends. They are just they are just my friends. But nowadays I saw students. They are all I think if if a class is of 50 to 60 people, they know Ji. each and every people, each and every one, and they were Yeah. Very well said. Very well said. yeah. And if I may make a comment here that abhi, although we're talking about generation Y and generation C, जब ये जनरेशन Z जिसको हम कह रहे हैं, जब ये लोग आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्सोलेसेंस है या रिडंडेंसीज हैं वो बहुत तेज हो जाएंगी. तो आप लोगों को तो कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा होना चाहिए उनसे, राइट? एंड अदरवाइज दिस न्यू जनरेशन दैट इज कमिंग इन, ये तो वाइप आउट कर जाएगी प्रीवियस जनरेशंस को, राइट? सो You are आई थिंक गुड, इसको कंस्ट्रक्टिवली अगर लिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जिसको आप लोगों को लर्न करना है. और ये पर्पस भी था इस सारी एक्टिविटी को अनमॉडरेटेड छोड़ने का. अदरवाइज इट वाज नॉट डिफिकल्ट के सजीद या मैं, हम दोनों में से कोई एक आ जाए, एक 5 मिनट की इंट्रोडक्शन दे दे और आपसे कहे जी अब आप कंटिन्यू करें. बट एग्जैक्टली ये पर्पस था इस चीज को लेकर चलने का. चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक एक आधा और कमेंट ले लेते हैं. आई थिंक बिकॉज देयर क्वाइट अ फ्यू हैंड रेजेस. वन सेंटेंस कमेंट प्लीज, एंड आई विल बिगिन विद सजाद. सजाद अहमद. सजाद, आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट करें आप भी, और एक लाइन का कमेंट प्लीज, ताकि मैं बाकियों को भी अपॉर्चुनिटी दे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, जो इशू आपने हाईलाइट किया कि जो डिफरेंस था स्टूडेंट्स के और मेंबर्स के एटीट्यूड में, वो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता, पर मेंबर्स में, क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमारे अंदर जो चीज़ डेवलप हो गई है वो कॉपरेशन नहीं है, वो कंपटीशन है. तो हम लेट गो नहीं करते चीज़ों को कि हम दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दें कि हर कोई उससे बेनिफिट ले. मॉडरेशन का भी एक एक्सपीरियंस है ना, ताकि हर कोई अपने आप को स्किल में डेवलप करे. यहाँ वो चीज़ शायद मुझे फील हुई. इस वजह ये भी एक रीज़न है उस चीज़ की कि हम लोग कॉपरेशन की तरफ नहीं जा रहे. हम लोग एक इस अपॉर्चुनिटी को भी एक टीमिंग की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि कंपटीशन की तरफ देख रहे हैं. हालांकि हमें एक दूसरे को एक साथ लेके चलना है, एक दूसरे को हाईलाइट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ्स को. टीम वर्क, ये देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस आप हायर कर रही हैं वो टीम वर्क, वो बिफोर हायरिंग देखती हैं कि आप लोगों में टीम वर्क कैपेबिलिटी है कि नहीं है. दिस इज अ सॉफ्ट स्किल. Therefore, this is a very important message. Exactly, it's one of the soft skills which is needed right now. Chaliye, this is something which I have noticed. Sure, thank you very much. Great. Tehmeena Shahriyar, thank you very much. Sajad, Tehmeena, unmute कीजिए. जी. Yeah, I have. Hearing all those mostly negative comments, I raised my hand to add something here. No, not. There were no negative. Sorry, they were positive criticisms. Positive No, learning outcomes. ये yes, positive aspect ये भी हो सकती है कि members इतना eager थे बोलने के लिए that there was a tussle going on, whereas students के केस में लोग इतना eager नहीं थे. This could have been a flip side of it also.
Yes, जी तमीना प्लीज आप बताइए आप क्या कह रहे थे that is where I need to point out something. कि पिछला जो session था, it wasn't that much of a chaotic as has been described here. मतलब कि I noticed कि everybody was being supportive for Arshad. The very appreciative ओके point here. मतलब कि even though Arshad didn't राइट know that he didn't have the hand raise option or the chat box, but he still agreed to go on as a moderator. Nobody said that he should be removed or things like that. So I didn't notice that kind of a competition that was being pointed out here. Ke leg pulling thi ya kuch. No, everybody was very supportive for Arshad. They actually wanted him to remain the moderator and give him the experience to handle Microsoft Teams and everything like that. So I would like to add ke मुझे professionalism नजर आया सब team members की तरफ से. ओके chaos इस तरह से नहीं वेरी था. नाइस Everybody did wait for their turn, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि they were trying to resolve the issue. वो चाह रहे थे कि प्रॉब्लम जो है कि हैंड रेज ऑप्शन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये रिजॉल्व हो जाए. तो इसलिए थोड़ा सा जरा मसला बना. अदरवाइज दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव. हर किसी ने अरशद को सपोर्ट किया. किसी ने आगे आके ये नहीं कहा कि आप हर साइड पर हो जाओ, मैं आगे आता हूँ. तो दैट वाज अ वेरी राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आपने बहुत ग्रेट एथिकली प्रोफेशनलिज्म शो किया उस सेशन में. excellent excellent thank you very much thank you Tehmina, let me then me move on to Bilal. But Bilal, one line send comment, please. कि हमारे पास जी Uh, thank you go on Assalamu alaikum, sir. Sir, yeah, Alhamdulillah. most of the comments have been made, and I agree with Tahmina. Yes, we all were really supportive. Start में थोड़ा issue था, but yes, we were trying to resolve, and overall it was a very, it went very well. So, and one thing I would like to Great comment great about that's the difference between students and members. Students are more, mhm. I feel this way, that they are more technologically savvy than us. Okay Or so we have to consider this thing. It's there. So, but yes, it gives us actually this thinking that we should also, look towards these things and softwares, and we should get used to it, so that we okay can have this skill as well. So, and rest of the ठीक है comments have been made. Yeah, yeah, that's it. great thank you very much Bilal thank you for keeping it positive मुदस्सिर तारिक जल्दी से अच्छा जी मैं बाकियों को भी चेक कर लूं मुदस्सिर मैंने Uh, अनम्यूट किया आपको if you want to say Harun, it's a namaz break now. जी ठीक है सजीद हम in less than a minute हम नमाज ब्रेक पे चले जाते हैं जी one final comment मुदस्सिर you want to say something if your mic works अस्सलाम वालेकुम हारून हारून मैं जस्ट एक लाइन ऐड करनी थी वो ये कि आई थिंक ये जो सेशन था हमारा ये 1 मंथ और 2 मंथ्स बाद हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब हम अपने आप को देखेंगे कि हम अब कहाँ खड़े हैं और 2 महीने पहले कहाँ पे थे आई थिंक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा था Exactly. I think आप जब when you be doing future sessions, they're going to be very very different from what it was in the first instance. So great, thank you very much. Thank you all of you for your fantastic feedback. And वापस आके हम 10 minutes की break ले रहे हैं. वापस आके I'll just take 1 or 2 more minutes in explaining now that most of the people are there in explaining कि आप groups की redistribution कैसे हुई और हम क्या करने जा रहे हैं. And inshallah namaz ke fauran baad aake I'll just take 2 minutes and then I'll head
Hello? Assalamu alaikum. Beta, we are on a namaz break right now. We will be All back right, on all right, 7:40. all right. All right, all right, all right. Take your time. All right, thank you very much. I hope all of you are back. Let's now move on to our session. But before that, let me make a few announcements. All of you would have received my email from last night. And as you can see, हमने जितने members थे उनको एक group में convert कर दिया है. So the name of the group is Group M, M representing members. और जो इस group की मीटिंग फ्रीक्वेंसी है, बल्कि किसी भी ग्रुप की मीटिंग फ्रीक्वेंसी, वो that is twice in a week plus one unmoderated session. So जो members के groups हैं वो Monday, Wednesday and Friday को meet किया करेंगे. So Monday को 7 to 9, Wednesday को भी 7 to 9 और Friday को भी 7 to 9 for their team work. Similarly, there's another group by the name Group Affiliates and Students. Again, their timing are also 7 to 9. So सब लोगों का एक standard slot 7 to 9 कर दिया गया है और इसकी वजह ये थी कि हमने ये नोटिस किया था कि जितने students भी इस group में शामिल हैं वो सब के सब भी working students.
One very positive fact that there are individuals at the student stage who are doing their training, which is very well appreciated. So for everyone, it's going to be 7 to 9. जो उनके days हैं वो Tuesday, Thursday moderated sessions and Saturday 7 to 9 for their unmoderated teamwork. So that's what the session is like now. There is, as I had mentioned earlier, there is a bit of an issue with an overlap, and that is that from the 4th of August, this platform will also be used by our education team for running prepare to pass sessions for students. So हमारे पास ये platform हमें share करना होगा, which does not mean that इसी session के साथ prepare to pass भी चल रहा होगा. हो सकता है आप लोगों को 4th को once again एक नया link भेजा जाए और उसके ऊपर again we'll try to keep the schedule the same. We will not change. Silicon ACCA is going to invest further into another license for GoToWebinar और उसके through आप लोगों को हो सकता है invite भेजा जाए. That is because जो prepare to pass sessions हैं वो 8:30 से 11 तक जाते हैं, 11:30 तक. So दो ही possibilities थी कि या तो हम ये वाले sessions 6 to 8 कर लें, लेकिन one feeling is that 6 to 8 will not be convenient for quite a lot of people because of their official work. So therefore, ACCA will probably have to purchase another license to start running these sessions in parallel to the prepare to pass या practice to pass sessions जो कि 6:30 से 8:30 से 10:30 रहा करते हैं. Okay, Tahmina, मैं आपका message भी पढ़ के सुनाता हूँ. That's great. That was one very positive thing that I also noted in the group, that जो members का group है, group M1 probably, उन्होंने एक LinkedIn group create किया है. मैं उस link को सबके साथ आप लोग देख भी सकते होंगे screen पे, but मैं इसको आपके साथ share भी कर देता हूँ अभी chat में. So आप इस पे, I would suggest all the members get together on this group. And secondly, for more instant communication also, maybe once you've all settled down and create a WhatsApp group as well, so that जो आपकी instant communications हैं, जी मतलब मैं यही बात कर रहा हूँ अभी कि जो हमारी instant communications हैं वो फिर हम WhatsApp group के through continue कर सकेंगे. जो हमारी पिछली 6 latest program थे उनके लोग अभी तक WhatsApp groups के ऊपर connected हैं एक दूसरे के साथ, and that's therefore this is a very long relationship that we see being created here between all the members who are attending it. Thank you very much, and I think this concludes my conversation. I will now request Sajid Aslam to come in and take us through his presentation for today. The topic for his presentation is focus. So, not a presentation, rather, not even a lecture. His talk about. Am I right, Sajid? Yep. Okay, all right. Over to you, Sajid. Thank you. Assalamu alaikum and very good evening. हम लोगों ने, अगर मैं एक quick wrap up करूं तो we talked about what and why question, we talked about introduction, we talked about the purpose side of it before, and we should look at the outcome, what we want to achieve within those transactions or within those interactions, I would say. Now, quickly, you remember we in the orientation session, most of the people who attended the orientation session, we talked about goals, and we will go back to the goals again. लेकिन इस दफा आपने गोल को इम्प्रूव करना है. उसमें दो एलिमेंट होने चाहिए और वेरी सिंपल आपने इस वक्त रखना है. आपने 5 years की बात करनी है. What you want to achieve one goal in 5 years. So time हमने already specify कर लिया. And now you have to come up with the specific goal. Examples of goals which are not specific. For example, I want to have a management role or executive role in a decent organization. This is not a specific goal, right? इससे बेहतर गोल ये है कि मैंने 5 मरले का 10 मरले का ये कनाल का एक घर खरीदना है 2 करोड़ का. ये स्पेसिफिक गोल है. ये स्पेसिफिक है, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके अमाउंट का आपको पता है, and you want to do that in a 5 year. But
career growth चाहिए, that's not a specific goal, right? Or या आप इसकी बात करें कि you need a certain level of earning, that's a specific one. I want to earn 500,000 a month by within the 5 years. So ये specific goal है. आपने एक specific goal देना है और उसके साथ आपने लिखना है why, and go deeper when you are going to use why you need it, why you want to achieve that goal. उस why का भी आप ध्यान से करना है. So दो चीजें हैं, specific goal और why. और why आपका बड़ा clear होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं. And just don't try to play God there कि आपने सारी humanity की खिदमत करनी है या आपने family को support करना है. So really bring it out why. आपको इससे नीचे जाना पड़ेगा कि आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, क्यों करना है आपने. अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, एंड पीपल हु हैव गॉट देयर ओन फेथ. सो व्हाई यू नीड टू बी वरीड अबाउट इट. सो ट्राई टू फिगर आउट योर व्हाई एट द सेम टाइम. ठीक है, इससे अगेन फैमिली को सपोर्ट करने से जो बेहतर व्हाई होता है, बिकॉज इट मेक यू हैप्पी, राइट. सो दैट्स अ बेटर व्हाई देन जस्ट टॉकिंग अबाउट बिकॉज यू वांट टू support your family. That's not specific because it's not you. आप अपने मुतालिक नहीं सोच रहे. So यहाँ पे why जो है ना, वो बड़ा personalized होता है, आपके emotions उसके साथ associated होते हैं, and you have to identify those emotions. So I'll give you 5 minutes. It's 7:48 on my clock. So अब हमने करना क्या है, हमने एक specific goal लेके आना है, और specific goal की मैंने आपको example दी, और उसका why लेके आना है कि वो why क्या है. ठीक है. So specific goal and why. So we have 5 minutes. It's 7:49 on my clock. So 7:54 पे we will start talking about it. So आप question में जो आपका question tab है, please start writing there. What is your specific goal and why you want to achieve it? I can't see it coming. So guys, think about it. You have 5 minutes. सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ. Specific goal and why you want to achieve that goal. एक goal next 5 years. Define your Mashraf Ali Khazi, define your dream house. That's very vague. Hello? So we have to go. GG. All right. That's fine. I thought the meeting is still on hold. No, it's going on. Continue, so continue. let me reiterate the question. The question is one specific goal and why you want to achieve that one. No, I want to work in multinational company, doesn't work in a preferably in management. No, you have to specify the name of the company you want to work. Which company you want to work in. So Muhammad Mubashir, be specific. I want to work in Nestle at the role of assistant account manager या business partner for dairy products to get a greater exposure. No. Why you want greater exposure? Why you want to learn? Why you want a career progression? देखिए हम काम करने के लिए तो नहीं पैदा हुए ना. That has to lead to something personal. Okay, so we got Fahim Ahmed. I want to be a CFO, not medium and large organization. You have to specify organization in time because I believe you should be at the peak. CFO is not the peak. CEO or a board member is. So, sorry, I lost that one. So,
I want to be a CFO, very specific. In a medium and large organization, define a name, because I believe you should be at the peak of career by 40. What does peak mean? How you will define peak? So I achieve my peak by 40 in term of my professional career, and then I focus fulfilling my other dream. Guys, except CFO and 40, there is nothing specific. Fahim Ahmed, okay. Malik Shehbaz Hussain, to be a CFO of an organization in power sector. So CFO and power sector is specific. To apply my knowledge and experience gained over the last 20 years, and to add value for customer and organization. So there is Malik Shehbaz Hussain. So CFO, very specific. Power sector, very specific. Add value to customer, very specific, but you have to really bring what value. But add value for the customer and the organization. So you might have to define value there, because the value could be very different, and then in a vague sense you may not focus on what value you want to add. But it's a good example of going specific. But if you can put the name of the organization rather than only the power sector, that will bring it more actionable. Okay, so Mohammed Bilal Butt, my goal is to lead internal audit department in apparel or fitness industry or consultancy firm. So all over the places which have client from these industry. Why? I can tell through microphone because it would be a lot to type. So you are challenged in terms of really overcoming the first hurdle which you are facing is typing. Okay, so we got Saida Manur Asif. My goal is to pay back 20 lakh loan of my parents are taking to purchase the house all on my own. So very specific. The reason is long my father wasn't in favor of me doing ACCA. He was of the view the money should be invested on his son. They are going to pay him back maybe, and I want to prove myself and that investment in me was worth it. And that, so very specific, Banur, and it has got the right emotion behind it, right? So I think Mahanur ne jo ek example likhi hai, although you may have a different examples there, but that is an example. This is an example of a very specific item. So paying back a 2 million worth loan back to the family, and there is an emotional reason behind it. So that's mean the drive to achieve that goal is already articulated there. And when you will keep repeating that, that will keep giving you the clarity. Fahad Mohsin, you are talking about investment decisions. So these investment decisions are your investment decision or NESCOM investment decision? On a Land Cruiser V8, very specific Tayyip, and I think these are the things which we are looking for. Many Shehzad, we are talking about yourself. Like if you ask me, I will never go in a public sector. I don't like public sector working, and I'm sure there are many people who will never work with the public sector just because of a very low salary, and then very bureaucratic structures most of the time, and unnecessary pressure for corruptions. So many want to have a permanent, that it's many is a very generalized one. So Shehzad Khan, you have to talk about your own goal. Nasir Khatak, okay, he left. Otherwise, Nasir Khatak, yeah, jahan pe aapne ye likha where to give answer to Sajid's question is exactly this is the box where you have to. So Muhammad Arshad set up garment business which can provide an opportunity to at least 99% 2 digits to eradicate unemployment. Yep, it's very specific and it has got a purpose as well.
discussion tab is not showing. Harun, आपकी screen पे discussion tab नहीं नजर आ रहा. So if you can bring that out so people can see that what's going on. Mohammed Arslan, I want right now. Sorry, नहीं मैंने आपको question tab से screen blue नजर आ रही है आपकी इस वक्त. अच्छा मैं कर लेता हूँ. Okay. Yeah, now we can see that. I want to establish construction company, and in the next why? Because incumbent government providing a lot of incentive. So if I Muhammad Arsalan Aslam, so there is an incentive, but where those incentive will lead. So you want to earn money, and why you want to earn money? So yes, it's specific construction company based on incentives, but what will happen? 5 साल में आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी एस्टैब्लिश कर लिया, आपने पैसा कमाया, तो फिर करेंगे क्या? That is the why, where you will spend that money. I want to be a senior manager in a company, Abu Dhabi, Pakistan, earning 400K compensation. That's a very specific, so good example. Start business, very vague. You have to be very specific, which business and leading to what. Tahmina, why? To get satisfaction of being able to enjoy the career life I sacrificed. Yeah, that's a good emotion. Saddam Hussein, to be promoted, at least. No, at least is basically, again, it's a compromise. To be promoted senior manager in PwC Europe and get foreign nationality. Very specific. But once you get a foreign nationality, what will happen? So what? Why you need foreign nationality? You want to drive it, your sense of security through that nationality. Some people drive it through the maybe the money in the bank. So people have a different way to drive that security, a sense of security. So foreign nationality is generally a sense of security. Goal to have at least 20 million in saving account. Great, very specific. I want to earn 1 million or above per month. You have to be clear around it. So I can share my wealth with people for educating them. 1 million पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना. If even as a month भी आप बात करें, so educating them, I know a lot of people who want to study but they can't. So 1 million is not good enough for that, but it's from a goal perspective. To earn 200,000, now we are looking at Rana Hassan. So earn 200,000 per month through passive income via trading mutual fund, as I don't want to rely on a one source of income. Secondly, I want to give time to things I love, playing guitar, singing and all that. So yep, so agar hum isko further articulate kare, so you want to have a consistent income of 200,000 without working, and you want to spend more time on playing guitar. So yeah, very specific, and it has got its right emotion. Furqan Farooq, believe me, 1 million per month earning में there is no luxurious lifestyle, luxurious car, or want to do more charity than the current. Yes, definitely वो एक charity का difference हो सकता है, because it make me happy and give internal. So you have got the emotion. So it's a very specific, very good example. But 1 million rupees and the luxurious lifestyle जो है ना, इसकी definition शायद आपकी बहुत फर्क होगी compared to somebody else who is already earning 10 million a month and already saying कि महंगाई बहुत हो गई है, गुजारा नहीं होता, right? So you will find people जो 10 million a month earn कर रहे हैं और उनका गुजारा नहीं हो रहा, and generally they can show you, वो अपना internal audit करवा सकते हैं कि why they will end up in a crisis, cash flow crisis at the month end, although they are earning 10 million. So luxury जो है ना, that's not a specific item. So you have to be a little bit specific, otherwise आपके luxury or somebody else's definition of luxury may be very, very different. I'll give you one example. I was in my early days in my career, so I was driving Mehran, and I'm talking 20 years back, and we were invited to a one party or a gathering, a social gathering, and there was a group, and they said कि हमने इस social gathering में नहीं जाना. And I said why? कहते यार वो सारा जो है ना Toyota और Honda वाला crowd है, so अब Toyota Honda वाले crowd पे नहीं जाते. And I was driving Mehran.
So you can well imagine कि definition चीजों की किस तरह change होती है. That's why specificity जो है वो एक important element होता है और वो आपको एक process देता है कि अब आपने करना क्या है. जब तक आप उसको vague रखते हैं ना, I'll do my best to achieve something. That's when you are not gonna do that. Simple, straightforward. अगर आपने उसे कहा कि आई वांट लाइक अगर आप इसी जुमले को चेंज कर दें आई वांट टू बाय लैंड क्रूजर V8 in 5 years, now you know what you want to do. Why? Because that gives you a sense of pride or आपकी jealousy है आपकी even I'm not sure if you have ever thought about the negative emotions. Those are emotions and sometimes those emotions are the drivers. I want to have a V8 because I'm jealous of somebody and I want to show that कि मैं भी ले सकता हूँ अगर वो ले सकता है, या I want to make somebody jealous and I want to use success as a best revenge for it. So yep, so these are the emotional conversation. Right wrong की बहुत definitions हो सकती हैं, लेकिन that's you have to be true to yourself. That's important while you are creating a focus. I want to establish Shumas Baloch. I want to establish a technologically advanced gadget manufacturing company so that our country don't need to depend on other countries to acquire advanced technologies. Be specific. Which technology, which industry, manufacturing is a very wide range we have got there. And Pakistan, mashallah, I'm not sure आप लोग का बहुत young है. हमारे पास एक हैवी मशीनरी का कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है and we used to export technology in 60s 70s. So technology हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू हमेशा से उस टैलेंट का और फोकस का है which we need to establish. So historically आप कोई चीज भी जो आज देख रहे हैं जो बाकी सारी दुनिया कर रही है, there was a time when Pakistan used to do that. But again, it depends on the quality of people, not the quantity of people, the quality of people who were leading at that stage. I want to be group chief internal audit in my current organization and is the University of Lahore associated business line in the group and want to earn 500,000. So yeah, so that it has got specific items. Okay, so if you can raise hand, I can see some people have raised hand and I would like to unmute you and मेरा आपसे सवाल ये है if somebody want to share चीजों को जब हम स्पेसिफिक करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या इशू आता है, जब हम स्पेसिफिक कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या इशू आता है, पहला हमारा सेंटिमेंट क्या होता है उसके मतलब, राइट. सो ये सवाल है, जब हम एक स्पेसिफिक गोल की बात करते हैं तो what happens mentally, क्या हो रहा होता है उस वक्त. So Uzair, if you are willing to share, I can. Okay, Uzair has lowered his hand. Maurice, you are self mute. If you can unmute yourself and you can share. क्या होता है जब हम specific item की बात करते हैं? Sir, basically we are thinking our environment, especially the things we don't have in our life. Just like if I don't have a car, so and my peers they have a car, and other people I used to see that they were driving their cars, their luxurious cars. So in my heart there is a desire to have a good car and to have a better life. Uh, that thing will specify what I need in my life, and then the decision gave that specific decision will be that we have to earn this thing in 5 years. Okay, so Maurice, आपका target, आपका goal क्या था? My target to sir establish a software company in US whose back office is in Pakistan, and we will capture the US market or Canadian market. They are जो कि हमें जो है सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करवाएं
लेकिन मैं उसका जो है सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफिस यूएस में बनाऊं और उसका बैक ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में बनाऊं, ताकि डेवलपर जो है यहाँ से डेवलप करके अपनी चीज जो है वो हम जो है वहाँ जो है इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, so software house with the back office, front office in US, back office, and you are okay to invest in that even if it's making loss, right? सर स्टार्टिंग में तो हर कंपनीज जो है वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हम 5 लॉस years की बात कर रहे हैं ना, तो 5 years में let's say if the software house, so what is your income target? Let me put it that way, very blunt. सर स्पेसिफिकली जो है क्योंकि माय फैमिली मेंबर्स दे लिव इन यूएस एंड I will be inshallah will be go Now to what is the income target in 5 years? income target will be around $50,000 to one lakh dollars Per month, per if day? for a month. Per month, per month. Yeah. So 50,000 per month. Yeah, 50,000 to one for starting at least for starting. We are in a 5th year ना, so 5 years का goal था, तो 5th year में हमें, तो आप $50,000 a month अपने लिए personal income की बात हो रही है, right? No, personal income तो सर जो है around $10,000 to $15,000. मैं ये अपनी business income की बात कर रहा हूँ. So आपकी personal income, why 10 to 15,000? Why not 50,000 or 100,000? सर इतने तो 50,000 तो सर जो है आजकल का डॉक्टर वहाँ नहीं कमाता. 30,000 जो है वो डॉक्टर्स की सैलरी है, मैं जो है एक्यूमुलेट कर चुका हूँ. इवन के 30,000 to 40,000 जो है वो डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट है वहाँ आप का तो एक business कर रहे हैं. Yes sir, business. Yeah, I am running a business, but at the start जो है जाहिर सी बात है I will reinvest my money into my business. So I will take 10 to 15,000. We are talking about 5th year. 5th year. Yeah. So that Yeah, means you have gone through that process and you are on your 5th year. So what is your income target? 10 to 15,000? सर अगर मैं अपने बिजनेस को 5 साल दे चुका हूँ तो then to sir $25,000 जो है it will be great. Yeah. Thank you Maurice. Anybody else who want to share? Mohammed Umair Khalid, you can unmute yourself. अस्सलाम सर. वालेकुम सर अगर मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करूं, जो क्वेश्चन था आपने पूछा कि क्या इश्यूज मेंटली देखने में आते हैं जब हम स्पेसिफिक होने का कहा जाए किसी को, कभी आप स्पेसिफिक हो तो मेंटली हम किस स्टेट में होते हैं? एम आई राइट सर? बिल्कुल यही सवाल है सर. मेरा जहाँ तक अब मेरी जो ओपिनियन है उस पर वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आइडियाज में क्लियर नहीं होते जब भी हमें स्पेसिफिक होने का कहा जाता है, क्योंकि हमने डीप थिंकिंग या उस तरीके से थिंकिंग नहीं की होती. और सेकेंडली आइडियाज में क्लियर होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम जो दावा करने जा रहे हैं उसको हम क्या इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं या नहीं. इधर बातें तो हम बहुत बड़ी कर रहे हैं. ये आमन लियाकत के शो में एक सेगमेंट आता था जिसमें कहते थे छोड़नी है जी आपने आगे. मैं एक लाइटर मोड में जाना चाह रहा हूँ, तो वो उसमें जाके ना वो जो मैक्सिमम दावा कर सकते थे वो उसमें करते थे. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज ये होती है कि आप रियलिस्टिक रहते हुए पैशनेट. मेरा ख्याल है कि आप किसी भी टारगेट को उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप में वो पैशन नहीं है. सिर्फ बात कर लेने से या एक टारगेट सेट कर लेने से शायद कोई उसके करीब पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए पैशन का होना बड़ा जरूरी है जो भी आप काम करना चाह रहे हैं. ये मेरी इनपुट है. थैंक यू. नहीं बहुत अच्छी इनपुट है और अभी हम इस पे एक वीडियो भी देखेंगे जो पैशन से रिलेटेड है. बट थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है. फियर्स, आवर फियर्स कम्स फॉरवर्ड. हमारी इमेजिनेशन की जो लिमिटेशन है, जैसे ही हम स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हैं ना, हमारे फियर्स आ जाते हैं. ओह डोंट सेट समथिंग फॉर अ फेलियर, क्योंकि अगर ये टारगेट मैंने सेट किया तो शायद ये ना हो. सो इसलिए बेहतर है थोड़ा सा वेग रहें. ये हो गया तो तब भी मैं अपने आप को रात को नींद के लिए मैं सुला लूंगा, और अगर ना हुआ तो तब भी मैं सो जाऊंगा. आई विल डू माय बेस्ट टू अचीव समथिंग, राइट? सो आई हैव डन माय बेस्ट एंड आई हैवंट अचीव्ड इट. दैट्स ओके. सो this is the mindset
जिसको हम यहाँ पे जब हम फोकस की बात करते हैं तो we will talk about why focus is important and why this specific conversation is important. So thank you Umair. So the key point Umair was raising is जो हमें खुद यकीन नहीं होता कि ये होगा भी, तो हम इतने डरे होते हैं कि हम उसकी बात ही नहीं करते, और स्पेसिफिक होते हुए हमें लगता है कि हमने किसी से कमिट कर दिया या अपने आप से भी कमिट किया, तो that will end up as a failure. So now if I can invite Kwab, I'm not sure if I'm still pronouncing the name right. Alapgeen. So our merciful warrior. You are on a self-mute. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज क्लैरिटी आ रही है क्योंकि मुझे थोड़ा इशू आ रहा था ऑडियो में। नहीं, आपकी आवाज हमें सही आ रही है इस वक्त। सर ओके सर, टू फोकस आई वुड से कि हमें स्पेसिफिक होने में सबसे ज्यादा इशू आता है क्योंकि हम थोड़े से टाइम स्पैन में बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। फॉर मी जनरल आइडिया सबको पता होता है कि 5 साल बाद सेटल होना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वही आप वाली बात के फोकस होने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है वो कुछ भी नहीं पता, वो नहीं पता होता। तो कुछ दैट दीज थिंग्स, आज ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। एज आई वुड से मुझे 5 साल बाद ये नजर आता है कि जो मुझे करना है इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलहदा घर, एक अच्छी कार, क्योंकि एक तो अपने आप को बंदे को ना सोसाइटी में शो करवाना होता है कि या आई एम सक्सेसफुल, और एक फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और मैंने यहाँ अपना स्पेसिफिकली लिखा भी था कि शादी करने जाओ तो सबसे पहले पूछते हैं लड़का करता क्या है। बिल्कुल नहीं, अब तो लड़की का भी पूछते हैं ना, अब तो लड़की का भी पूछते हैं, लेकिन it's becoming a culture जहाँ पे we will see आज से 5-7 साल बाद जो couples होंगे both will be working। बिल्कुल एग्जैक्टली, वरना उसके बगैर गुजारा ही नहीं है आजकल के जो हालात चल रहे हैं। तो यही है सर कि फोकस करने में बंदे को अपनी एग्जैक्ट जो पाथ है, जो लाइन है, जो गोल है, शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि 5 साल का, फिर 5 साल के बाद भी तो कुछ करना है। तो यही आप वाली बात के 5 साल, 2 साल, 3 साल में वो अपने आप को कहाँ देखता है, इसको सोचना बहुत हेक्टिक काम है, और इस पे खड़े रहना फिर, क्योंकि आज हम तो सारे इतने लोग लिख रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। कल सुबह उठेंगे तो फिर सब कुछ गायब हुआ होगा, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है डे बाय डे, डे टाइम के साथ साथ, कि अच्छा ये सोचा था, चलो अब ये कर लेते हैं, साइड पे निकल जाते हैं। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से सर। सो फोकस में एक चीज जो आपने हाईलाइट की, एक तो क्लैरिटी का इशू आता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, सोसाइटी नॉर्मली हमें बता रही होती है। और दूसरा एक पॉइंट हमने रेज किया था अर्लियर कि वो जब हम स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने फियर्स और इमेजिनेशंस जो हैं वो हमें डराना शुरू कर देती है कि भाई क्या बात करने लगे हो, ये तो फड़ मारने वाली बात होगी, या क्या वो छोड़ने वाली बात, जो एक बात कर रहे थे कौन सबसे ज्यादा जो है वो गप मार सकता है, बड़ी गप मार सकता है, रेफरेंस एग्जैक्टली, ठीक है। exactly, so thank you sir. And if we can invite and I can't miss Tamina, you please come and share your experience के जब आप इस प्रोसेस में होते हैं, आप अपने गोल सेट कर रहे होते हैं and you are forced to be specific, so what type of emotion you go through, आपकी क्या ज़हनी कैफियत क्या होती है, या क्या किस प्रोसेस से गुजर रहे हो? I would like to focus more on why. Keeping your specific goals is the easier part. I guess the most difficult part is realizing why are you going for that goal. Because sometimes you are not ready to face the real why. You are trying to hide from that why, and you're not ready to face it. And one of the reasons can be because it starts appearing too ugly to your. मतलब आपको ये लग रहा होता है कि if I actually accept कि भाई this was the reason behind my goal, तो शायद मैं जो अपने बारे में एक आइडिया रखता था कि मैं तो बहुत समझता था कि मैं दुनिया के लिए करना चाहता हूँ, now I'm going to realize that I was doing it for my own self. मैं अपनी दुनिया में नाम कमाने के लिए या दुनिया में अपना पावर लाने के लिए, whatever the reason you hold, you are not actually ready to accept that कि हाँ वाकई इस रीजन की वजह से मैं ये करने जा रहा था। तो sometimes you are actually lying to yourself and you are not ready to face yourself in the mirror. So the why becomes the most difficult part in all this process. Lovely Tamina, and definitely ये एक बहुत बड़ी reality है, जैसे ही आप why में जाते हैं ना, it become very ugly for us based on our social norms. अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं अमीर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अय्याशी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, let me use that phrase, right?
how it will land with the society in general. हम उसको लग्जरी कह देंगे तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम उर्दू में उसी को लेके आएंगे तो शायद द वे इट विल बी कंसीव उसकी बड़ी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। या मैं कहूँ कि मैंने पैसे कमाने हैं बिकॉज आई वांट टू रियली ट्रैवल द वर्ल्ड और मैंने एक लग्जरी लाइफ स्टाइल की साइड पे जाना है। आई डोंट केयर कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे नहीं गर्ज कि किसी को एजुकेशन चाहिए, ये मैंने आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। when you really go deep down बहुत दफा ये ह्यूमैनिटी वाला कवर होता है and it may or may not be the real you. So जैसे जैसे आप why को प्रॉब करते हैं ना तो आपको अपनी शक्ल नजर आना शुरू होती है और sometimes we don't like it because हमने अपने लिए जो फॉल बनाया होता है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। I'm not saying for everybody but generally that's where why we don't want to be very specific, क्योंकि उसके बाद जब आप why देखेंगे ना तो वहां पे मुश्किल आना शुरू हो जाएगी। Thank you, Tamina. So we have got 3 points so far. Number 1, एक तो हमें क्लैरिटी नहीं होती। नंबर 2, हमारे अपने फियर्स होते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक नहीं होना चाहेंगे कि मैंने असिस्टेंट मैनेजर या इन नेस्ले डेयरी कैटेगरी में जाना है बिकॉज मुझे आज नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगा, तो मेरा वो जो अनसर्टेनिटी होती है दैट ड्राइव मी नॉट टू मेंशन इट। मेरे दिल में होगा कहीं लेकिन मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कल को मैंने किसी को कहा और मैं ना गया तो बड़ी बेइज्जती करते हैं। और आपको पता है जो आई एम नॉट श्योर कितना ग्रुप है इसमें से जो गुजरांवाला, फैसलाबाद या लाहौर से है, बिलीव मी दोस्त झुकते मार मार के जो है ना हाल बुरा कर देते हैं। दोस्त छोड़े, पेरेंट्स और सिबलिंग्स नहीं छोड़ते, वड्डी गाल करता सी, राइट। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम स्पेसिफिक ना हो, क्योंकि स्पेसिफिक होने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है हमारे लिए भी, और देन अदर पीपल स्टार्ट होल्डिंग अस अकाउंटेबल कि आपने ये बात की थी की है। Let me bring on this discussion Arbab Shaukat. So जब आप एक स्पेसिफिक कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या मसाइल आते हैं आपको? I think we are discussing in the context of goals, right? Yeah. So when you, in terms of goals, when you try to be specific, Yes. what kind of process you go through emotionally and mentally? So I categorize goals in terms of 3 categories. These are basically emotional, physical, and financial goals, right? So the most difficult part for me is to prioritize them. And this is something I really struggle with, the prioritization of the goals. Yeah, the prioritization comes later. We are talking about a one specific goal. So हमारी exercise जो थी, that is more towards one specific goal within 5 years. So prioritization तो later आएगी, अभी तो prioritization आती है how part में। अभी तो हम how part की बात ही नहीं कर रहे ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं what is your specific goal for the next 5 years. So if I ask you what is, so let's take that example. आपका specific goal क्या है जो अभी आपने यहाँ पे which you mentioned about? Yeah, sure. So I want to initiate a startup that revolves around the concept of a TPL for a finance function. Okay, great. And I'm currently looking for mentors and also have applied to NAC, the National Incubation Center, for their processing. So this is a current program. And why you want to do that? Why you want to have a startup? Sure. So I have already I have had that employee mindset for a long time. When I say long time, I mean for about 8 to 10 years, for the last 10 years. So I want to step out of that mindset and test my limits and potential for my idea. That's about it. Okay. No, I think it's a very brave statement and it's a good goal to set. Although जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो शायद हम इसमें specific functions की भी बात करेंगे, how part की भी बात आएगी कहीं पे, how we can do that, and most importantly how this group can really assist you in achieving what you are specifically want to achieve, at least one item in the next 5 years. So आप वो ecosystem, वो collaborations और वो support structure किस तरह create कर सकते हैं with ACCA as an organization and ACCA members as a support structure, how you can really draw all those resources to help you out to achieve something which you have specifically set for yourself, right? So that's why we want to go more specific in the goals, and we will come back to that how वाले part को जब हम sort out कर रहे होंगे तो वहां पे आपको बहुत सी suggestions मिलेंगी और बहुत सी support structure में आपको चीजें मिल रही होंगी, but I think you have got the right emotions around it, and I wouldn't say
very specific, but at least clear goal already mentioned there. So, yep, thanks, Abab. If we can request Farwa. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे शुरू के तो 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। एक तो नंबर 1 बिल्कुल ही सही है, फेयर वाला, क्योंकि लिखते वक़्त सबसे पहले हमें डर लग रहा होता है, तो वो फेयर तो है ही। और दूसरा, तहमीना के पॉइंट को भी मैं बहुत एम्फसाइज़ करूँगी कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चैरिटी वर्क और उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ, और मैं हमेशा जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन खोलूँगी। लेकिन अभी आपने जब मुझे गोल लिखने को बोला, तो मैंने उसमें सिर्फ़ अपने ही बारे में लिखा कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और ये वो। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में ये नहीं आया। हो सकता है कि मैं उसको अपने आप को सर्व करने के बाद उस तरफ जाऊँ, लेकिन फर्स्ट तो मैंने अपने आप को ही रखा। तो ये बिल्कुल सही बात तहमीना ने कही कि हम अपने आप को देखते हैं आईने में, हम सेल्फ लाइंग कर रहे होते हैं। तीसरा, मुझे लगा कि हमारे अंदर खुद में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता लिखते वक़्त, कि हम उसको खुद भी बिलीव नहीं कर रहे होते। हम लिख तो देते हैं, लेकिन हमें बिलीव नहीं होता कि हम सोचते हैं कि यार इसकी प्रोसेस क्या है या इसके क्या स्टेप्स होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अपना भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसके अंदर होता है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और अगर मैं इससे एक स्टेप आगे चली जाऊँ, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी की भी बहुत कमी होती है। अभी जो मैंने गोल लिखा, हो सकता है 1-2 हफ्ते तक तो मैं बहुत अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, और उसको अगर मैं देखूँ कि मुझे स्टेप समझ में भी आ जाए, तो मैं उसपे हो सकता है 1-2 हफ्ते जल्दी उठ जाऊँ, ज़्यादा मेहनत करूँ। लेकिन फिर हम उतने कंसिस्टेंट रहते नहीं, क्योंकि गोल दूर है, तो शायद कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से। नो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है व्हेन यू फॉलो थ्रू दैट, जब आप उसको प्लान करते हैं कि आपने अचीव कैसे करना है। एंड आपका ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे, दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी आती है जब आपके पास व्हाई का आंसर आता है। व्हाई इज द इंटरनल ड्राइव व्हिच कीप टेलिंग यू एवरी मॉर्निंग कि आपने ये क्यों एफर्ट करनी है, क्योंकि कोई भी गोल अचीव करने के पीछे ना बहुत एफर्ट होती है, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे बहुत एफर्ट होती है, और उसके बाद चीजें स्टार्ट कमिंग अलोंग और वो सारी सही होना शुरू हो जाती है। लेकिन इनिशियल एफर्ट जो होती है, चाहे स्टार्टअप हो चाहे बिजनेस हो, वो बहुत ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मतलब आप दिन में कोई 28-30 घंटे अकेले काम कर रहे होते हैं। हाउ यू डू दैट वी डोंट नो, बट एवरीबडी डज दैट जब उस पे आता है। लेकिन वो जो वाई एक सिंगल फैक्टर होता है ना, वो बहुत हेल्प करता है। We will share some negative examples there, how people have really channelized their negative emotions और वो किस तरह हेल्प करते हैं समटाइम। और नेगेटिव इमोशन समटाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं आपको ड्राइव करने के लिए। और एक आजकल बड़ी अच्छी टेड टॉक है, इफ यू कैन शेयर दैट इमोशंस आर इमोशंस, इज नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो कैटेगराइजेशन इंसान ने की है इन अ रीसेंट 200-300 years। उससे पहले इमोशंस वर कंसिडर्ड इमोशंस। अल्लाह ताला ने अगर एक इमोशन दिया है तो वो गलत या सही नहीं है, उस इमोशन का रिस्पॉन्स आप किस तरह करेंगे ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। सो बड़ी अच्छी एक टेड टॉक है which is talking about the emotion and how you can channelize different things. So Junaid Khan, you are on a mute, and you are on self mute, so you can unmute yourself. You want to share something? Junaid Khalid sir. तो सर मैं तो पहले तो आपको थैंक यू करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हम इस चीज़ का सेशन का पार्ट है। और सर मैंने जो चीज़ एक सेशन से आपसे ये जो चीज़ें ली हैं उसमें सबसे मेन चीज़ है सर हमारा माइंड सेट। मैं ये समझता हूँ कि सर हमारा माइंड सेट जो है ना, हम इस चीज़ को टारगेट ही नहीं करते कि एक चीज़ को फोकस करके गोल नहीं अपना आइडेंटिफाई नहीं करते। देन सर हम जो आपने एक बात की हम बिग नेम्स के पीछे करते हैं, जैसे ACCA मेंबर और PwC बिग फोर, तो इन चीज़ों के पीछे जा रहे होते हैं। जहाँ तक आपको इसका रेलिवेंट टू इस क्वेश्चन का जो है ताल्लुक, सर उसके अंदर बिल्कुल रेलिवेंट लोगों ने भी बताया कि एक तो फियर होता है, जैसे ही आप बोलते हैं कि आप अपना कुछ स्पेसिफिक करें, तो सर हम लोग को मतलब इस कमिंग डांसिंग कि भाई क्या हो रहा है, मतलब हमें क्लियर ही नहीं हो रहा कि भाई वो क्या क्या स्पेसिफाई करें। जैसे अब मैंने अपना गोल रखा है, स्पेसिफाई है, लेकिन अभी क्योंकि हमने सिर्फ वाई पे रहना है तो हाउ पे नहीं जाना, तो मैंने सर ये अपना कि कोई भी मैं बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, खासतौर पे अकाउंटेंसी फर्म, कोई भी नहीं, मतलब अकाउंटेंसी फर्म में, ताकि और मेरा स्पेसिफिक अर्निंग का भी मैंने रखा विदिन 5 के भाई इतना प्रॉफिट हो पर मंथ जो है 50,000 पाउंड तक उसका
एस्टीमेट है मेरा मंथली जो है नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसका अचीवमेंट सर वही मतलब इसके पीछे वाई की क्या रीज़न है वाई की रीज़न तो फिर अगेन यही कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व तो करना चाहते हैं लेकिन फिर ये बहुत मतलब इस तरह आ जाएगा कि अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ह्यूमैनिटी ही मेरा पर्पज है नहीं बस वो भी एक लाइन में है मेरे पास बट पर पहले सर मैं अपनी आप लाइफ में सेटअप होना मतलब हर कोई ये चाहता है कि अपनी लाइफ में सेटअप हो जाए और वो जो जो चीज़ें उसके पास नहीं होती तो वो उसके लिए मतलब सेटलमेंट यही होती है कि आप देखते हो अपनी फैमिली प्लान करते हो फिर उसको प्रोवाइड कैसे कर सकते हो देन देन अगर आप इन चीज़ों से सेफली निकल आते हो तो फिर आप सोचते हो कि अपने सोसाइटी को कैसे गिव बैक करना है तो सर मेरा ये इस पे ये थिंकिंग है थैंक यू जुनेद। और अगर आपको याद हो जिन लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड की थी वहां पे हमने एक बात की थी कि वी मेक डिसीजंस जो कि या इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस बेस्ड होते हैं या हमारे पैशन और बिलीफ पे होते हैं और वहां से हम ड्राइव करते हैं एफर्ट और एफर्ट ड्राइव करती है डिजायर्ड लाइफस्टाइल और डिजायर्ड लाइफस्टाइल के बाद आता है प्राइड। So there is no harm. That's a known psychology of human being. कि pride wala giving something back to the society may not be the first priority. The challenge is that when it's not a priority at all, वहां से challenge शुरू होता है. So particularly the young people like yourself, it's इस वक्त जो हमारे पास जिस जनरेशन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं आई थिंक गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप मेरी जनरेशन में जाएं या मेरे से एक जनरेशन पीछे चले जाएं तो वहां पे शायद हमारे लिए डिजायर्ड लाइफस्टाइल जो था वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था और प्राइड या गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी हमारे लिए शायद उस वक्त हमारे कहीं रडार पे भी नहीं हुआ करती थी एक टाइम पे, राइट? But आज के बच्चों से जब हम बात करते हैं तो they always come back whether they talk about the climate change, whether they talk about how to really help people who are not going to school या आप unemployment की बात करते हैं like बहुत से लोगों ने जिन्होंने business की बात की I love that one they always talk about not only for what they will earn but how they will create employment. So over the period इंटरनेट ने मूवीज ने कंटेंट ने हमारा एक हमें थोड़ा सा अवेयरनेस दी हुई है। अभी हमने सिर्फ जो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि हम अपने आप को बेहतर जाने। हमारा अलमिया जहां से शुरू होता है ना वो ये कि जब हम अपने आप को उस तरह नहीं जानते और हम सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं एज आवर गोल्स। So there is no harm in doing that as long as you are aware you are doing what you are doing and why you are doing it, right? So specific goals जब भी हम सेट करने जाएंगे so that brings focus. अगर मुझे पता है कि मैंने 5 साल बाद 5 लाख रुपया मंथली कमाना है और ये इसका रीजन है that's what drives me, तो now it's a very specific item and it will bring a focus. अब मुझे ये पता है कि अगर ये मेरा एक ही चीज है 5 लाख रुपए after 5 years, how does it feel? So जब आप उसे इमेजिन करते हैं उस फील को आज आप लेके आ सकते हैं अपने इमोशंस में, दैट्स बिकम योर ड्राइव। हम 5 लाख क्यों नहीं कहना चाहते? डर लगता है यार मैं 25,000 रुपया कमा रहा हूँ और मैं 5 लाख की कैसे बात करूं? जैसे अभी हमने बात की वी वर ट्राइंग टू प्रॉब, लेकिन 5 साल बाद भी जो है वो वन ऑफ द मेंबर वाज नॉट विलिंग टू गो बियॉन्ड 10, 15, $20,000. Why not $500,000 a month? Why not? अभी आपने प्लान थोड़ी बनाया, टारगेट तो वो सेट करें व्हिच इज इंस्पायरिंग। और क्या लोग $5 लाख नहीं कमाते पर मंथ? $1 मिलियन पर मंथ नहीं कमाते क्या? यू डोंट नो पीपल अराउंड यू जो ये इस तरह की अर्निंग कर रहे हो या यू डोंट नो ऑफ दोज पीपल जो इस तरह की अर्निंग कर रहे हो। सो अगर एक बंदा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है इसका मतलब है हर कोई चढ़ सकता है। प्लान करना है, एफर्ट डालनी। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं आप नहीं चढ़ सकते सो आपने वो डिनाइल में चले गए कि आप वो एफर्ट करने को तैयार नहीं। आप चढ़ सकते हैं बट इट्स योर चॉइस नॉट टू डू इट, बट इफ यू डिसाइड टू डू इट यू कैन डू इट। दिस इज द डिफरेंस। सो जब आप एक चीज लेके चल रहे हैं देयर इज नथिंग, जब आप गोल सेटिंग कर रहे होते हैं ना तो हम अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक की बात नहीं करते, क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं उसके बाद प्लान डालते हैं ना तो उसमें या टाइम चेंज हो जाएगा या माइलस्टोन चेंज हो जाएगा। सो अगर मैं कहता हूं मैंने 5 साल में $500,000 a month कमाना है, दैट कुड बी डेफिनेटली इट कुड बी अ गोल। कैसे? जब मैं इसका प्लान करूंगा तो या तो मैं ये कहूंगा नहीं मैंने 5 में नहीं कमाना 10 में कमाना है, या मैं कहूंगा यार ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो 2.5 साल में बन जाता है। सो मैं जो एफर्ट करना चाह रहा हूँ और जो अपॉर्चुनिटी मेरे इर्द गिर्द अवेलेबल है मैं 5 साल क्यों वेट करूं, मैं तो 2.5 में कर लूंगा, राइट? बट इफ यू कीप चेंजिंग दैट कि अच्छा मैं 5 कह रहा था मैं 4 कर लेता हूँ, मैं 2 कर लेता हूँ, मैं 3 कर लेता हूँ, यू आर नॉट गोना गो एनीवेयर।
सो ये हो सकता है कि आप ये कहें कि ये 5 लाख जो है मैं 10 साल में करूंगा या 2.5 साल में करूंगा, लेकिन अगर आपने कहा चलो यार 5 नहीं होता तो 2 कर लो, 2 नहीं होता तो ये कर लो और 10 कर लो, सो नाउ यू आर सेटिंग अप योरसेल्फ फॉर अ फेलियर, क्योंकि आप एक गोल को सेट करके उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है, यू आर मेकिंग अ डिसीजन, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर इट, आप वो एफर्ट नहीं करना चाह रहे। सो आप उसका ब्लेम सोसाइटी पे भी दे सकते हैं, बट यू हैव टू फिगर आउट हु यू गोना ब्लेम इट, राइट। सो हमारे लिए सबसे आसान ये होता है ना यार, जनरल मार्केट कंडीशंस खराब थी, उसी मार्केट कंडीशन में बाकी लोग आगे भी चल रहे हैं, अच्छा 3 लोग आगे चले गए, 97 तो फेल हो गए, अगर एक भी चला गया तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट करती है, व्हाट समथिंग इज देयर where you can really rely on, आप किसी चीज को मिस आउट कर रहे हैं, अगर एक बंदा जा सकता है फिर सब कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट अगर एक ने सर कर लिया तो दैट्स मीन माउंट एवरेस्ट सर होती है। You could be either the one who can create that opinion or you could be one who is willing to follow that, आपकी चॉइस है। You could be the one जो पहले बताएगा कि हाँ माउंटेन्स डू मूव, या आप माउंट एवरेस्ट सर कर सकते हैं और बाकी लोग फॉलो कर लेंगे, या अगर किसी ने कर लिए तो देन दैट्स मीन इट्स यू कैन डू इट एज वेल, खत्म होगी बात। अब तो वो इम्पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, करके दिखा दिया किसी ने। सो जब आप गोल सेट कर रहे होते हैं ना, तो जब हम स्पेसिफिक होते हैं तो वो हमारे इंटरनल फियर्स होते हैं, हमारा लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, हमारा माइंडसेट मुसलसल हाव में होता है कि हम कैसे करेंगे यार, ये भी तो हो सकता है ना, और अगर मैंने किसी से बात कर ली फिर क्या होगा, राइट। सो अगर आपने किसी से बात कर ली तो बताने देंगे। नासिर खटक इज सेइंग दैट गोल शुड बी रियलिस्टिक। व्हाट इज रियलिस्टिक? क्या पाकिस्तान बनना एक रियलिस्टिक था, या आप माउंट एवरेस्ट सर करना एक टाइम पे रियलिस्टिक नहीं था, या जहाज का उड़ना भी एक टाइम पे रियलिस्टिक नहीं था। उबर या करीम जैसा एक जो मॉडल है वो भी एक टाइम पे रियलिस्टिक नहीं था, एयरबीएनबी भी एक टाइम पे रियलिस्टिक नहीं था। बट यू हैव टू फिगर इट आउट, इफ यू आर डिटरमिन इनफ कि ये आपने करना है, यू विल गेट अ क्लैरिटी। और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद नहीं होगा, you will be more learned about it। लेकिन जब आप गोल चेंज करना शुरू करते हैं तो you let your fear drive your decisions and actions। set a goal which you really want to achieve। आपको हो सकता है $5 लाख नहीं चाहिए, that's fine, but set a goal which you really want to achieve। don't set a goal it's vague term में जो कि आपको ये सेटिस्फेक्शन दे दे कि अगर ना हुआ तो कोई मुझे ताना नहीं मार सकता। आपके fears should not be the driving factor। स्पेसिफिक कन्वर्सेशन के बगैर फोकस नहीं आता। स्पेसिफिक कन्वर्सेशन जब तक आप नहीं करते, यू जस्ट कंफ्यूज पीपल, रिगार्डलेस जितना मर्जी पैशन और ऑथेंटिसिटी आप उसमें शो करना शुरू करें। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन brings clarity, specific information brings trust। So let's go to a video, Nizam or Harun, if I can request, if I can request to play the video। Okay. It's not a failure after 5 years। I think while you are working, जब आप इसका प्लान बना रहे होते हैं ना, तो वहीं पे क्लैरिटी आ जाती है। What does it take and do you have what does it take? So इसीलिए पहले गोल सेट करना होता है और फिर उसको वर्क बैक करना होता है प्लान के साथ और एफर्ट के साथ। So लेकिन गोल जरूर सेट करना होता है, and that should not be set out of fear, it should be set based on what you really want to do। हारून अगर आप लिंक भी शेयर कर लेंगे, इट विल मेक इजियर फॉर पीपल टू वॉच इट ऑन देयर ओन लैपटॉप और सिस्टम, अगर उनको किसी को भी इंटरनेट का इशू आ रहा हो। Yes, Sunil, I think जो लिंक अच्छा आ गई है, I thought it was broken link, मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। ओके।
Thank you, Harun. Thank you, guys. Just quick feedback. Harun, if you can stop the video now. Okay, thank you. Guys, if with the raise of hand, if you can come back and let me know. Have one more chance for a deal. So, world famous podiatrist walks in the door and says, "Okay, Dr. Football, why is yours better than something I can create? What is it that?" Guys, can we stop video? We can hear it. That you brought. So, bam, what's the answer? Not coming from my side, right? Why is your actually going to be better than something? Because we spent over a year determining how to make this Somebody the is most running a video and thank you. Thank you, guys. Just a quick one. Raise your hand, and we will suggest if people who haven't shared it earlier, if they can come forward and share their views. Okay, great. So, Fahim Ahmed, if I can start with you. क्या मसला था इस पूरी pitch में? The question is, इस pitch में क्या मसला आ रहा था बार-बार? Well, the thing is कि स्टीवन को भी कहता है कि you do something twice. एक आप imaginary form के अंदर करते हैं, then you do the same thing in real world. अगर आप imaginary world में कोई चीज नहीं करेंगे, that's what we were talking about, what and why. They just came and started talking about how is it going to work, how is this app is important for people, how is it going to work, but they didn't mention what this app is about, why this app will help, and how they started talking about how all the time. So I believe that the imagination world was not there. They when you start imagining something, when you do it first time, so you think about, okay, what is going to happen, what are the risks, and every other thing. Like in their entire pitch, they didn't have clue what are the risks. Like they said that, okay, anyone can copy this, so they didn't know why, means why this app is different than any other app. So I believe that why and what was missing, and they only talked about how in the entire pitch, sales pitch.
Thank you, Fahim. And if we can request Zabiullah. Zabi, if you can unmute yourself. Okay, Adil Hussain, if you can unmute yourself. Adil Hussain. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, sir. The first thing that I can say about this is like they were not well planned and they did not do their homework very well. Obviously, once the issue related to Zeppo came up, they were like completely blank that why haven't we thought about it and put it on their website, and they were like, oh, we are going to do that in the future. But those Shark Tank guys, they were already saying like, why haven't you even thought about it right now? Matlab, it's a main feature for website for shoes and everything. So that should be your focus, that should be already have been your market, but you guys haven't even like stepped into that market yet. So what you're focusing right now are things, well, you should be aiming high, you should be focused and be specific, like we will aim and reach our market and our target audience through this Zappo website, but they ever not even there yet. Secondly, the other thing is like they had hired some team to create their software or app or whatever, but they haven't like patented or like copyrighted it somewhere that it doesn't have to be copied or pirated somewhere else. They should have gone through patented, मतलब उसको copyright करना चाहिए था, but they right now are still blank and Thank you, Adil. Thank you very much. And if I can request Uzair Ahmed. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Gigi, we can. Sir. Thank you, sir, for giving the opportunity. So basically, what I got, they are not getting what is the requirement of the user, but instead they are telling about what they have. Secondly, unrealistically high expectations, maybe due to 13,000 downloads after spending of $2,600 on advertisements. And third thing, I noticed that they're not ready for asking the questions about what the other person needs. They are just telling them what we have, and this is going to be huge and making a big difference. So thank you very much, sir. That's all. Harun, I think there was some issue with the connection earlier. So if I can invite Hira Jalal. Hello, Assalamualaikum, sir. Ji Adil, we know that you lost your connection. Yeah, please. Yeah, sir, there were a lot of things that were wrong. Number one, they were selling a faulty product. They had a back-end issue, but they still went and they were very enthusiastic about it. It's a very judgmental. Hira. Just hold on. Okay, it's a very judgmental if you say that it's a good or bad product, right? So our role is to observe beyond the obvious. जो उन्होंने कहा उसकी बात नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है उनका attitude or behavior. What was the issue there? So like Barbara said, like, you know, they had like this
perfect example of being enthusiastic but not being able to convey their message. And then they kept interrupting each other, which was and wouldn't pause to answer the questions. And I think they should have targeted, Robert, or because he was a technology tech person and he always invests in something. They hadn't done their homework properly. So I think they had to target proper people. Like if they wanted to target Laura, they should have had a pattern. Like, so I think their homework wasn't complete and they were just enthusiastic about it. And I wasn't saying it was a bad product, sir, but I'm saying that they had a problem in the back end, but they still decided to pitch it. So I think that was where it was, lacking. Thank you. Thank you. Thank you, Hera. And if we can have one or two more people, and then we will share that. Okay, Usama bin Mansoor. Usama bin Mansoor. Assalamu alaikum. Ji, Usama. Well, they were quite enthusiastic about selling their product. In fact, they were overexcited about selling their product. But what they lacked was they didn't actually have a marketing pitch for it. Plus, they were actually lacking in all the sectors where they wanted to actually pitch, where they actually wanted to get a pitch out of those Shark Tanks. They were already in connection with another app, and they weren't able to sell themselves over there. So what they lacked is they actually, what they lacked in the sellability, they actually compensated in their over enthusiasm. So you need both aspects. Thank you. Thank you. Thank you. I think keep bringing it in a question box, and meanwhile, let me give you some of my observation. There are a couple of things which were worth noticing, and I would encourage you go back and have that view that video again. एक चीज जो इसमें बड़ी वाजिया थी, they don't have focus, they were not taking their audience along. वो कभी एक साइड पे जाते थे, कभी दूसरी साइड पे आए थे. There was no specific conversation happening. उनकी स्टोरी जो थी, the way the story should be told, वो aligned नहीं थी. वो किसी को उस जर्नी पे, इमेजिनेशन पे नहीं लेके जा रहे, right? So वो लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहे कि वो किसी एक आइटम पे फोकस करें. कभी वो एक चीज पे फोकस करते थे, कभी दूसरी चीज पे फोकस करते थे. That's one thing. Specific focus was missing. And then rightly pointed out, they were not understanding the audience. उन्होंने अपना homework नहीं किया हुआ था. And they were too much focused on how this app will work. इस पे से ऐसे करके उसका पाँव का निशान लेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर Zappos, और फिर उनके बिजनेस मॉडल की भी अपनी क्लैरिटी नहीं थी उसमें कि बिजनेस मॉडल उन्होंने रेवेन्यू कहाँ से कमाना है. इट्स अ कमीशन फ्रॉम द Zappos, or whether it should come from the advertisement within, like in app जो advertisement का concept होता है, या sponsorship से लेना. So they were not very clear in that one. और चूंकि वो खुद इतने क्लियर नहीं थे, तो they were unable to really build that focus कि उन्होंने इन्वेस्टर को किस USP पे, इसके यूनिक सेलिंग जो फीचर्स हैं उसके ऊपर फोकस करवाना है. क्योंकि इन्वेस्टर ने जब डिसीजन लेना है, सिमिलर जब हमारे ऑफिस में कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो हमने जब डिसीजन लेना होता है, वी नीड टू फोकस ऑन 1 or 2 आइटम्स, नॉट ऑन 100 आइटम्स. और वो 1, 2, 3 आइटम्स के बेसिस पे हम लोग फैसले कर रहे होते हैं. अब एक और एग्जांपल हमने अभी शार्क टैंक की बात की, बट हमारी लाइफ में ये बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली हमारे कल्चर में ये चीज बहुत कॉमन है कि जब गुफ्तगू शुरू होती है तो वी स्टॉप लिसनिंग एंड वी स्टार्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न टू स्पीक. और अगर हमें ज्यादा टेम्पटेशन हो रही हो तो फिर हम दूसरे का वेट भी नहीं करते, हम एक का जुमला चुरा के दूसरे का, मतलब वी स्टार्ट द क्रॉस टॉक हम जिसको कहते हैं, वो शुरू कर देते हैं. और ये हमारे उस पे टीवी चैनल्स पे भी हमें बहुत ज्यादा नजर आता है कि दूसरे की बात काटी और अपनी बात शुरू कर दी. So rather than waiting, listening, absorbing and bringing a focus कि आपका point क्या है, we get into the generic conversation or we normally lose everything. The whole point of bringing it out, आपको बहुत journal example मिलेगी. ये तो हमने Shark Tank से उठाया था. आपको ये बहुत journal example मिलेगी अपने everyday life में, जहाँ पे भी एक debate शुरू होती है या एक
प्रोपोजिशन टेबल पे रखी जाती है, एवरीबडी कम्स बैक विद देयर ओन ओपिनियंस, और वो दूसरे की ओपिनियन सुनने को भी तैयार नहीं होता, और जिस बंदे ने भी ओपिनियन दी होती है, जब आप उससे क्लैरिटी मांगते हैं तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग 10 different argument rather than coming up very clearly what they are trying to put as an opinion and why they have that opinion. So एक simplicity के बजाय एक complexity की साइड पे एक जर्नी शुरू हो जाती है, और वो कन्वर्सेशन कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से एंड नहीं होती. बाय द वे इसका एंड ये था कि वन ऑफ द शार्क एग्रीड $100,000 for 40%. They were asking 15% for $75,000. So and they agreed to it क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई ऑप्शंस ही नहीं छोड़ी थी. Right? So it's a very important element कि आपने जो जर्नल कन्वर्सेशन आपकी सोशल और प्रोफेशनल कन्वर्सेशन भी होती है has to be specific, because specific conversation bring focus, or focus is the only thing which help you to really create a plan. अगर मैं आपको एक example, if I pick up a one example कि again हम life goal की बात करते हैं, that's more relatable. If I come up with the example, I want to have a luxurious car in 5 years time. अब मुझे बताएं कि मैंने अपना प्लान कैसे बनाना है. I don't know the price of the car, I don't know the brand of the car, I don't know why I want it. मुझे क्यों चाहिए वो. एक बंदा जो बाइक पे फिर रहा है उसके लिए मेहरान लग्जरियस है, और जो बंदा ऑलरेडी लैंड क्रूजर पे फिर रहा है उसके लिए आई डोंट नो व्हाट द लग्जरी मीन. राइट? सो हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक लग्जरी की डेफिनेशन होगी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू नॉट टू जनरलाइज थिंग. जैसे अभी एक स्टेटमेंट आई थी पब्लिक सेक्टर के हवाले से कि एवरीबडी लाइक टू हैव अ परमानेंट जॉब इन अ पब्लिक सेक्टर. दैट वुड बी माय व्यू कि आई वांट टू हैव a permanent job in a public sector, or I don't want to have a permanent job in a public sector. I don't want to even go near the public sector, right? But that could be my opinion. I can't say that nobody wants to go for the public sector. I know people who will love that, but that's their choice. There's no right and wrong. But specifically, वो उस शख्स की एक ख्वाहिश है, so उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. कोई जनरलाइज करने से आप अपने लिए भी एक आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं, like why I want to go in a public sector, because everybody wants to do it. Then I don't have to provide me a reason why I want to do it, because I'm a follower. I'm just अपने आप को मैंने satisfy कर दिया because everybody wants it. Why I want a bigger house? Because everybody wants it. Why I specifically want a bigger house? Now it will get me thinking. मुझे क्यों चाहिए बड़ा घर? मैंने किसी को impress करना है. I want people to really respect me because of the house. And those are the ugly conversations which normally we don't want to get into. मुझे एक लग्जरियस गाड़ी इसलिए चाहिए ताकि people should respect me. So actually I don't need a luxury car. I need a respect. और respect गाड़ी से नहीं आनी, respect character से भी आ सकती है. Edhi is a very respected guy. He might not have that Land Cruiser. So this why will help you when you have a specific conversation, and that will bring focus. और focus के बगैर plan नहीं बनता. Unless until you have a specific conversation, you cannot have a focus, and unless until you are not focused, you can't get into how part. तो अभी तक की हम जर्नी देखें तो हम बार बार जिस चीज को चैलेंज करते आ रहे हैं ना, वो है कि हमारा जो माइंडसेट है, we start with the how, and then the second mindset we try to be like हम अपने आप को हमेशा डिफेंड कर रहे होते हैं, because we don't really want to explore who we really are, because sometimes we don't like it. जब हम उस शख्स से मिलते हैं ना जो हम एक्चुअली होते हैं, हमें नहीं पसंद आता. आई एम टेकिंग अ वेरी जर्नल एग्जांपल राइट नाउ अगेन, कि जब हम बात करते हैं कि हमें पैसा चाहिए या बैंक बैलेंस चाहिए या फॉरेन नेशनैलिटी चाहिए, अब मैं ये कहूं कि आई वांट टू rely on the material resources and drive my sense of security from that material resource rather than relying on the God. Right? It's a very big statement, but just try to analyze your why, what we are saying. अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमें एक मटेरियल रिसोर्स होगा तो हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी ड्राइव करेंगे, दैट्स मीन आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन माय सेल्फ कि अगर खुदा ना खास्ता मैं बुरे हालात में चला जाऊंगा तो जिस शख्स के पास पैसा था उसके लिए अच्छा हुआ, तो आई शुड आल्सो गो एंड हैव दैट मनी इन द बैंक because that's my reliance. So that means I'm not relying on myself and I'm not relying on the God. So we really have to think, and I'm not saying everybody will come up with the same why, but just try to think, अगर ऐसी कोई चीज आती है
तो I'll not like myself कि मैं material resources से एक sense of security develop कर रहा हूँ. That's against, like for me, that might be against my faith. And then I'll not like myself when I'll be doing it. But that's exactly what I'm trying to say and do. So वो जो contradictions होती है ना, वो आपकी लाइफ की बाहर आना शुरू हो जाती हैं जब आप specific conversation करते हैं, why का आंसर देते हैं, एक focus लेके आते हैं, and the focus is the one which will help you ultimately to create a plan to achieve it. Or you might rationalize your goals. जैसे अभी हमने बात की कि $5 lakh per month realistic है, unrealistic है, you don't know. Somebody have a capability to do it, somebody may decide not to, but that's a decision. And you will really see कि इसका compromise क्या है. $5 lakh a month के लिए शायद आपको family life sacrifice करनी है, आपने 28 hours a day अगले 5 साल तक काम करना है. It may not be worth it because you are compromising on your happiness, and you might decide not to compromise, and you will be happy maybe $5,000. But make your decision why you want it, what you want it specifically, and that will bring focus in your life. And that focus will help you to create a plan to achieve it. और ये तहमीना ने बड़ी अच्छी बात की थी कि डिस्कवरी फेज में जो सबसे खतरनाक चीज होती है ना, वो है जब हम अपनी एक ऐसी शक्ल देखते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, and we stop talking, we stop having a specific conversation, क्योंकि हर specific conversation के बाद जब हम why को ढूंढने जाते हैं तो वहां पे जो हमें शक्ल नजर आती है वो हमें पसंद नहीं आती. But it's okay, right? It's okay. We have to see that face which we may or may not like, or sometimes you really get surprised क्योंकि why के बाद जो आपको अपनी शक्ल नजर आती है आप अपने इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, right? So try to find your real self. So अगर आपको पसंद है तो you will continue, अगर नहीं पसंद है तो you will fix it. But अगर आप वो देखने से इनकार कर देंगे तो फिर वो पाथ नहीं हम बना सकेंगे जिसके थ्रू आपने किसी भी किस्म का गोल जो है वो अचीव करना है. गोल सिर्फ स्किल सेट पे नहीं अचीव होते, गोल माइंडसेट से अचीव होते हैं. सो जिस माइंडसेट में आप होंगे उस माइंडसेट को ड्राइव करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को जाने पहचाने, और जानने पहचानने के लिए स्पेसिफिक कन्वर्सेशन करनी पड़ती है. वेग कन्वर्सेशन सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस देती है और हमेशा किसी थर्ड चीज को ब्लेम करती है. So specific conversation and the why around the specific conversation will help you to bring focus within your own life and within your own goals. अपने इश्क में गिरफ्तार होने के लिए जो है ना वो बहुत जरूरी है कि पहले आप उस चीज को देखें. हो सकता है कि आप अपने इश्क में गिरफ्तार ना हो, और ज्यादा चांसेस इस एज में which age you are going through उसमें यही होती है कि जो शक्ल हमें अपनी नजर आती है we try to improve it, and once we improve it, believe me, everybody love themselves. जब एक दफा आप देख लेते हैं ना your real self, whatever you are, and then you make an effort and you see yourself again and you compare it, you love yourself. Not everybody does it in their life, particularly developing countries and the cultures like Pakistan, India, Africa, Bangladesh, Sri Lanka. हम लोग self अवेयरनेस पे टाइम भी नहीं गुजारते और समटाइम हम अपने आप को पहचान भी नहीं पाते जब हम अपनी असल शक्ल देखते हैं. लेकिन जब हम देख लेते हैं, बिलीव मी, द लेवल ऑफ एफर्ट आई हैव सीन पीपल पुटिंग इन एंड चेंजिंग दैट वन, वो वाकई इश्क में गिरफ्तार होने वाली बात होती है. So guys, thank you very much. I'll hand over to Haroon, and there is no assignment, there is only one assignment. आप जो कुछ यहाँ पे conversation कर रहे हैं, please try to use this one very next day at your workplace, and without telling anybody, try to test that. Specific conversations को, focus को और why को test करें. Don't try to impress people that you are doing a different conversation, but try to practice that, and people will tell you कि आपके पास कोई change आ रही है या नहीं आ रही. But सिर्फ गुफ्तगू बराए गुफ्तगू जो है ना वो help नहीं करेगी. आपको ये demonstrate करना पड़ेगा कि there is a certain dent, there is a certain damage, and you are okay with it, and you really willing to demonstrate that in your everyday life. अपनी family से शुरू करें, अपने बच्चों से, अपने parents, siblings, friends, and your work life. उसमें इन चीजों को थोड़ी थोड़ी एक change, one small change a day will help you to bring a massive difference in maybe 6 months time. Right? So just try to challenge yourself around it. अपने fears को prevail नहीं करने दें. Specific conversation में सबसे पहला जो emotion आता है वो fear का ही आता है, failure का आता है. So let it be there.
right? So we will deal with the fear, we will deal with the failure. We are courageous enough. इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत हौसला दिया हुआ है. We will handle that. But don't let your fear drive your life and decision. Guys, thank you very much. Over to you, Harun. Thank you very much, Sajid. Thanks a lot. Sajid, आपने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया इनको? फ्राइडे तो छुट्टी है और फ्राइडे को इनका वो सेशन था, तो इनको तो I think everybody should have been given a lot of things to do over the, you know, for the team session. मेरा ख्याल है सबसे जो मुश्किल काम मैंने दिया है वो ये है कि next couple of days they have to have a Let's load them with work. ईद तो कम से कम मजे की गुजरेगी. Okay, all right. चले, interesting. Thank you very much, Jeet. In any case, Friday, Saturday, Sunday, अब 3 दिन जो हैं ये that's going to be Eid. So enjoy yourself over Eid. But ये जो focus है or you know, the discussions that you've just done, apply it everywhere. So apply it in the things you do in real life. Apply it in the things you do in your professional life. A few announcements to share with you. And one announcement is from a partner organization. इन्होंने अभी recently अपना एक portal launch किया है for it's an initiative for online ordering of vegetables and fruits. So उनकी तरफ से एक offer है, and I thought कि मैं बाकी members के लिए तो बाद में distribute करूँगा. पहले मैं अपने 6 digits वाले जो members attend कर रहे हैं पहले उनके लिए मैं ये announce कर दूँ. The name of the portal is sabzis.com, and I'm trying to open up the exact URL जो मैं यहाँ पे share कर देता हूँ. So the offer is कि जो उनके going rates हैं उस पे the portal is offering a 10% further discount by entering a specific code, which is ACCA 2020. So I am going to circulate an email announcement to all of you, those of you who are interested in buying vegetables or fruit. I think उनके लिए एक अच्छी option है कि वो you know इस portal से purchase करें जहाँ पर ये ACCA members को 10% discount है. The limitation, however, is that this is only available to people in Lahore. So I'm sorry about creating the suspense first, and there may be individuals who are who are probably not in Lahore, and therefore they may not be able to benefit for now. So that information coming to you. अब हम एक तो you know very small things to be discussed. आपकी क्या request है जी मिर्जा अवैस बेग? मैं देखता हूँ. Your request was, I'm sorry, give me 1 second. Harun, can you hear me? Okay. जी Sajid, I can hear you. Mirza West Beg की request है that all 3 working days is very difficult. Monday, Wednesday, Friday, so you can keep the sessions on Tuesday, Thursday, Saturday. Further Saturdays are not moderators who can't. We members discuss it internally, sir. ठीक है. Monday, Wednesday change नहीं हो सकेंगे. लेकिन फ्राइडे की जगह अगर आप सैटरडे को करना चाहते हैं तो वो टाइम स्लॉट आपको चेंज करके देखना पड़ेगा. तो इफ ऑल ऑफ यू एग्री, मैं सिर्फ एक मेंबर ने रेज किया है, अगर ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस ओनली देन वी विल बी एबल टू स्विच, क्योंकि यू नो जो स्केड्यूल किसी एक को सूट करता है वो दूसरे को नहीं करता. तो इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू प्लीज एवरीवन. तो इसको थोड़ा देख लेते हैं. अच्छा ये देखें आप, साथ ही फुरकान फारूक
और हेरा ने कह दिया है कि जी नहीं ना चेंज करें. So that's the challenge, friends. Friday is fine. So unfortunately हम इसे Friday पे ही रखते हैं. Saturday, Tuesday, Thursday जो है वो students और affiliates का group already in place है. ठीक है जी. I think one interesting fact, and आज when I was out to meet another a very old friend of mine, जो कि एक बैंक के branch chief हैं. So I went on to explain to him ke ACCA, what is this organization about, what is the product, who are we talking about, and it was a renowned bank, and he said that yeah, there is this impression that ACCAs quit their jobs very soon. Is that the case? And I had to cover it up. I don't think that is the case. I mean, I know people, most of the people जिन्होंने 6 digits का initial performer fill किया था. I have seen people जिनका 20 साल का experience है और they have worked with 1 or 2 organizations in this entire experience. So होता in fact ये है कि the word spreads around uh, on the basis of an act of one individual. So जब हम ये discuss कर रहे होते हैं कि ये when you're representing a brand, so this brand that you represent, this lapel pin that you wear on your coat, जब आप इस umbrella के नीचे, when you take a decision or when somebody takes a decision which is not very professional or which is which has an implication on the brand name, so that disadvantage is then transferred to every individual who's associated with that brand. So whenever life gives you an opportunity, please उसको avail करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा professionally act कर सकें करें. So on a very quick note, I know this, you're all experienced, you would know better than me. So first of all, exactly expectations जो आपकी और आपके employer की हैं, वो day 1 पे coincide करनी चाहिए, meet करनी चाहिए. Okay, that only then it's a win-win relationship. And if let's say the employer expects that you should not leave them, without giving a notice or by at least giving a 3 months notice or a 1 month notice, please fulfill your requirements before you move on to another organization. He didn't have any comments to make about the capabilities. He didn't have anything to say about. He just said, I've heard कि ये लोग बहुत जल्दी move कर लेते हैं jobs. So I mean that's how impression about people, impression about qualifications. He did not say a particular name also कि मेरी organization में एक individual था, उसका फला नाम था, वो तो बहुत जल्दी switch कर. He didn't say that. He said ACCAs तो बहुत जल्दी jobs switch कर लेते, right? So please remember कि ये एक बहुत important factor है. आपकी अपनी reputation in addition to आपकी body की reputation, आपकी qualification की reputation, they're all intertwined. So be very, very professional in your approach and you're in dealing with various organizations, whether it's an employer, whether it's a consultant, whether it's a colleague in your organization, a team member in your organization, etc., etc., or even if it is your previous employer. Okay. All right. Thank you very much. I hope you enjoyed today's session as well. We have already seen some very good feedback coming in. So प्लीज अगर किसी ने अच्छा लिंक्डइन ग्रुप के लिए एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि probably 2 लिंक्डइन ग्रुप्स बन चुके हुए हैं. एक तहमीना शहरियार ने लिंक्डइन ग्रुप बनाया हुआ है जिसको मैंने चैट में शेयर भी कर दिया है. एक और लिंक्डइन ग्रुप हमारे एक फ्रेंड हैं, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने भी बना लिया है और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी 50 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. प्लीज आप लोग आपस में एग्री कर लें पहले कि कौन सा एक लिंक्डइन ग्रुप है जिस पे आप लोग सब गैदर होंगे, एंड दिस शुड बी अ वेरी क्विक एंड सिंपल डिसीजन. प्लीज
तो उस ग्रुप को स्टैंडर्डाइज कर लें, मैं उस ग्रुप को पूरे ग्रुप एम के अंदर प्रमोट कर दूंगा एंड देयर यू कैन टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। सेकेंडली व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, अब चूंकि हम लोग सेटल हो गए हैं और इसके बाद रीग्रुपिंग नहीं होगी, इसके अंदर कुछ लोग ऐड जरूर होने हैं अभी। सो जैसे ही वो हो जाते हैं तो मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा एंड ऑल ऑफ यू देन बी एबल टू इंटरैक्ट। इसके लिए मुझे आप लोगों से एक कंसेंट फॉर्म फिल कराना होगा। अब ये इट लुक्स सो मच लाइक मुन्ना भाई MBBS situation where for everything you have to get forms filled up, but unfortunately it is required. You have to fill up a form, give us your consent that your telephone number etc will be and name will be shared in the group. So only if you volunteer will your name be. I cannot just pick up my list of all the members in group N and create a WhatsApp group. It is not going to happen like that. Okay, so I think all of you would have noted the names of the two LinkedIn groups. एक तहमीना ने इस जगह पर हाईलाइट किया हुआ है और एक को आपने यहाँ हाईलाइट किया हुआ। प्लीज आप लोग एग्री कर लें कि कौन सा वाला ग्रुप फाइनल है और उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे। ओके ओके, तो प्लीज लाइक आई सेड आप लोग आपस में इसको डिस्कस करके एग्री कर लें। वी हैव टाइम टिल द नेक्स्ट इंटरेक्शन, नेक्स्ट मॉडरेटेड सेशन, और उसमें हम फिर इसको फाइनलाइज करके इन द फर्स्ट हाफ एन आवर वी विल देन टेक इट फॉरवर्ड। Okay, thank you very much. Great interacting with you guys once again, and we will now meet inshallah on Wednesday, that's day after tomorrow, with the new session. Thank you very much, Akib. Thanks a lot. I think it could go to Sajid. He's really putting in a lot of effort. So please be engaged, and that's the reward that we are looking for. Please be engaged in the conversation. Please get the maximum benefit out of it. Chaliye ji, all right. Thank you so very much. I will not take any more time, and inshallah we will meet on Wednesday. Take care and Allah Hafiz.